Sharma, Respected Director Shri Dilip Heda Sir, respected Directress Srimati Kavita Heda Ma'am, Respected Principal Shri Praveen Maskari Sir, esteemed teachers and all happy patients present here. Today I, Kritika Lonkar, and as Tushti Chandak wish you all a very happy Independence Day. We are here to host the program of this auspicious and unforgettable day. A warm welcome to our chief guests with a big round of applause and thank them for taking the time to be with us today. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। This is Tanmaya team from class 9 presenting today's assembly. It is important for everybody to prepare ourselves for the day. Prayer is a conversation with God and through which we can develop a meaningful relationship with God. I would like to call Kashish for prayer. Join your hands, close your eyes and repeat after me. Almighty God, Creator of all, I believe that you are omnipresent. Please illumine my mind with true knowledge of you. Help me to apply myself. Teachers, family and friends. Give me courage to be truthful. Honest and obedient. To myself and to others. In whatever I do.
us. I love my country. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. Rich and varied heritage. I shall always try to be I shall always try to be worthy of it. worthy of it. I shall give my parents, I shall give my parents, teachers and all elders teachers and all others respect and treat respect and treat everyone with courtesy. everyone with courtesy. To my country To my country and my people, I pledge my devotion I pledge my devotion. in their well-being In their well-being and prosperity. and prosperity. Alone lies my happiness. Thank you. जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक इसमें जान है, जब तक इसमें जान है। And protect our freedom. All of us Indians are very fortunate to have the chance to celebrate the festival of independence. आणि हे निद्रा येऊ नये म्हणून त्याच्यानंतरचा महत्वाचा टिप्स जो आहे ते आहे अल्प आहारी. आहार कमी पाहिजे. अल्प आहारी वधू त्यागी आपण अध्ययन करण्यासाठी येतो म्हणून अल्पाहारी वधू त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम काकचेष्टा भक्त ध्यानम श्वान निद्रा तथेवच अल्पाहारी वधू त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम. First of all, on this auspicious day of 76th Independence Day, I wish you all the very best and congratulate you all for staying in the free India. Okay, thank you very much. And as you all know, parents, Happy Faces is much famous for doing the experiments. And I feel very proud that most of the parents or all the parents know that this year our school has become the first 100% digital school in Maharashtra. First 100% digital school. And at the same time, parents, I definitely can assure you that you must be seeing the change in your students. They're becoming smart with all the sports activities, music, dance and everything that the core curricular activities that we are taking in the school. Today, I would like to announce 3 things in front of you. Students, you know, but still your parents should know. In our new building, we have made
a tin shed with a huge height of 90 feet by 210 square feet. So that is around 20,000 square feet. And I will declare here that this Independence Day that we are celebrating in this school will be our last one, and we will celebrate from the next year in our new tin shed. Okay. The same way, in our new building, we have constructed the first floor with new 8 classrooms. Those will be given to 9th and 10th standard, and along with that, 2 halls of 250 seating capacity, where all the 4 sections A, B, C and D can sit together for their lessons. And if we want to conduct the classes of 2 sections, 2 classes of 100 seating capacity in all. This has been constructed, and definitely we will launch or inaugurate it very soon in the month or like that. Okay. And the same time, parents, I would like to announce that today we are launching our new Android student app. New Android and Apple student app, which will be available for the download on your smartphones or tablets. Just you have to do Happy Faces the Concept School Washing for grade 1 to 10. Happy Faces the Kids Planet Washing for playgroup up to UKG. And Happy Faces the Concept School Malegaon from nursery up to 8th standard for the students of Malegaon. So this app has been officially launched, and from today you can download it, where this app will provide you fantastic new way to gain quick access to your child's school information and keep your parents up to date with how well their children are getting on into the school. The latest school news, school calendars and other helpful information will also be available on the app. It will be available on Google Play and Apple Store. There you will get the notifications when sometime we need the online classes for the new students who have not understood the topic. Evening hours will be for the online classes there. Switching the siblings, the app will have, suppose we have 2 or 3 siblings in the same school, there will be the switch sibling formula into that. Then online fee payment, circulars and study material, examination results, report cards, assignment and solution submission, and at the same time your attendance. The profile of the student, attendance, fees, examination and GPS tracking will also be there, which will be our next step. This year we are not going to that. And with this, we will be every time on our developmental stage, and what we believe is that we have to give back to the society where we are staying, and Heda family, along with my teachers and my staff, we are devoted for that, and we promise you that we will give you the best in Washing and more probably in Vidarbha also. Whatever we do is something excellent everywhere. Thank you very much. And parents, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, give your students the wings. Give your students the wings. आप अपने बच्चों को पंख दो and watch them fly. आप अपने बच्चों को पंख दो और उड़ते हुए देखो उनको. हम आपके साथ हैं. We are always with you. I thank you for your kind support and the faith that you have given on Happy Faces. Thank you very much. Thank you. Teacher, parents, director sir, directress ma'am, chief guest, and all my dear friends. I am Shri Pandey and I am Sharmani Busari from class 8A. First of all, thank you for giving us such a great opportunity to speak about this proud day. So let's get started. Today we all are gathered here to celebrate a day of our freedom, that is Independence Day. हर घर में तिरंगा हम लहराएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव पूरी शान से मनाएंगे. India became independent from the British rule on 15th of August 1947. Since then, we are celebrating our Independence Day on 15 August. It's a day when we come together to celebrate a great freedom. We should never forget the sacrifices of all those freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many more. Because of their sacrifices,
So we should always respect our freedom fighters who fought bravely to make our country free. इसलिए तो कहते हैं, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम आए तो जिंदगी किस काम की. So dear audience, know the value of freedom, and this is not something obtained at once. We are born in independent India, but our freedom fighter didn't. In 1757, the East India Company defeated the last Nawab of Bengal in the Battle of Plassey, which marked the beginning of British rule in India. The Indian Rebellion, or the First War of Independence, took place in 1857, which was a major yet unsuccessful uprising against British rule. In the year 1885, India's first political party, Indian National Congress, was formed. After the conclusion of World War I in 1918, Indian activists called for self-rule or Swaraj. In 1929, the Indian National Congress declared Purna Swarajya, or the independence of India, at an assembly in Lahore. Finally, after a series of sessions and meetings between the British government and the East India Company, the Lord Mountbatten, who served as the last viceroy of the pre-independence India, agreed to the proposal. At the stroke of midnight of 14th August, while the world was in sleep, India awoke. Lord Mountbatten partitioned British India into two independent nations, India and Pakistan. This marked the first India independence in 1947. देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है. हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है. Gandhiji dreamed of an independent India with non-violence and peace. India is our motherland, and we are the sons and the daughters of the soil. So it is our responsibility to protect the harmony of the country from its enemies, and it is our responsibility to lead our country ahead and make it the best country of the world. Freedom is something that money can't buy. It's the result of struggle of so many brave ones. So let us honor them today and always, and make a strong decision to value our nation and never forget the sacrifices of all those who gave us freedom. ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है. हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं. So give a big cheers, Independence Day is here. Let us together say, East or West, India is the best. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पर गए. सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अल्लाह बख्श कई वीरों ने हमारे इस भारत भूमि पर बलिदान दिए. दोस्तों, आजादी का महोत्सव तो हम हर साल मनाते हैं, पर अब हमें स्वराज्य को जैसे शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में बदला, वैसे हमें अभी भारत देश को एक सुंदर भारत देश में बदलना है, और इसके लिए हमें काम करना होगा. दोस्तों, पर ये जरूरी नहीं कि हमें हमारे देश के लिए काम करने के लिए बंदूक लेकर सीमा पर जाना होगा. हम जो भी है, जहाँ भी है, अगर हम वही काम बेहतर तरीके से करें तो वही एक देश सेवा होगी. अगर हम एक डॉक्टर है तो फिर अच्छा डॉक्टर बने, अगर हम एक किसान है तो फिर हम उससे अच्छा किसान बने, अगर हम एक वकील है तो फिर उससे अच्छा वकील बने. अगर हम एक डॉक्टर, वकील, किसान, इंजिनियर नको घरात मन गाजवण्याची आता काही वेळ नाही. मनातली बरगट तुझ्या तेवढी आता दूर देशासाठी एवढं कर. भिंतीवरती थुंकू नको, रस्त्यावरती घाण नको. भिंतीवरती थुंकू नको, रस्त्यावरती घाण नको. घरामागचा कचरा तुझ्या तेवढा एकदा साफ कर. करायचं असेल तर देशासाठी एवढं कर. जे जगले तुझ्यासाठी, तुझ्यासाठी मेले. जे जगले तुझ्यासाठी, तुझ्यासाठी मेले. पोटच्या लेकरं माझी वाऱ्यावरती सोडून गेले. निदान एक दिवस तरी तू त्यांना स्मरण कर. करायचं असेल तर देशासाठी एवढं कर. जय हिंद, जय भारत. As we know, we got freedom on 15 August 1947. Our national leaders Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rajguru, Netaji Subhash Chandra Bose, and many other soldiers devote their life for independence. यह समय है उनकी कुर्बानियों को याद करने का. First day and today is Independence Day.
very special day for all of us. On this day, our country became free from British rule. Hence, we celebrate this day to remember sacrifices of our great freedom fighters. They devoted their whole life for independence. On this day, let's promise to be good citizens and let's love our country. गुनगुनाएंगे वादा कर इस देश को कि दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। सभी भारतवासियों को हक्कानी तेजस का नमस्कार। दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम जब भाग्यशाली है कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्मना है। ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आज़ादी के बदले में हमारे कितने भी जान जेल हुए। दोस्तों, जब एक नौजवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे जाता है तो केवल एक ही नौजवान तैयार नहीं होता, तो उनके पूरे माँ बाप के कई सपने, दूरी, मंगलसूत्र और तैयार होते हैं कई आज़ादी। अब जब कभी आतंकवादी हमलों में वो सैनिक शहीद हो जाता है तो पता है क्या होता है? इस धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है और उनके माँ बाप चकनाचूर हो जाते हैं। उनके बुढ़े माँ बाप के कई सपने, चोरी मुस्कान सब एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं। जब एक जान ले होता है तो केवल एक परिवार नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जो चादर का महीना होता है। My name is Ilchan Malik. I am from LKG class. Wish you a very happy Independence Day to all of you. Independence Day celebrated on 60th of every year. This is a festival of India. This day teaches about our meaning. द्वारा किए गए वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद आजादी मिली थी। हम भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद के बलिदानों को कभी भूल नहीं सकते, जिन्होंने कम उम्र में अपने देश के लिए जान गंवा दी थी। हम नेताजी और गांधी जी के सभी संघर्षों को कभी अनदेखा नहीं कर सकते। गांधी जी एक महान भारतीय व्यक्तित्व थे, जिन्होंने हमें अहिंसा का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया था। स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत देश शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। हमें अपनी सरकार चुनने और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के आनंद उठाने का पूरा अधिकार है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता जैसी समस्याएं हैं।
शाम का अब देखो क्या करता है ये पता हिंदुस्तान का तो किसी ने दिखाई चुका नहीं ना मैं हूँ उस बेस का बैठ के ले नजारा स्ट्रैपल और बेस का चलूं ये चलूं ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख तो भी रेस का करके दिखाऊंगा दुनिया से खाली हाथ नहीं जाऊंगा जब तक पकड़ छाड़ूंगा तो मैं उखाड़ूंगा जहाँ से आया है ना वही तुझे गाड़ूंगा मेरी सभी पे आज तुझे ही बचा दूंगा चंदा इंडिया करके गाड़ दूंगा मुझे कोई परवाह नहीं माँ ही मेरा रब है मेरी माँ ही मेरा पीर मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं नाचूंगा तो फिर दूर है नाचूंगा मजबूर है आज की शाम मेरी माँ के है नाम मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है नाचना जरूर है मुझे नाचना जरूर है मुझे नाचना जरूर है माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है Shut